Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव नागपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा। Thank you, Vishal. Wholesale inflation drops to 1.22% in December due to fall in food prices. Domestic stocks log modest gains amid mixed global cues. Sensex closes at 49,584, Nifty settles at 14,596, and gold prices fall in sync with losses in international markets. खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी से थोक महंगाई दर दिसंबर माह में गिरकर 1.22% पर आई। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मामूली बढ़त। सेंसेक्स 49,584 पर हुआ बंद, निफ्टी 14,596 पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में गिरावट से घरेलू बाजारों में सोने के दाम गिरे। The wholesale inflation WPI for December 2020 dropped to 1.22% against 1.55 in November 2020. According to the Commerce and Industry Ministry data released today, WPI fell mainly due to lower food inflation. Inflation in food articles slipped to 1.11% in December compared to 3.94% in November 2020. In December, fuel and power index contracted 8.72% against a fall of 9.87% in November. The WPI inflation was 2.76% in December 2019. Due to declining food prices, retail inflation also fell sharply to 4.59% in December compared to 6.93% in November. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation data released on Tuesday, retail food inflation declined to 3.41% in December 2020. राजीव नागपाल जी, थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट यानी कि थोक महंगाई दर में कमी आई है और इससे पहले हमने खबर सुनी कि सीपीआई यानी कि खुदरा महंगाई दर में भी कमी दर्ज की गई है। तो क्या ये राहत की खबर है एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? नहीं, देखिए, इन्फ्लेशन हमेशा एक तो देखना चाहिए कि किस वजह से गिरी है। कुछ सीजनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द ईयर फूड इन्फ्लेशन कम हो जाती है। सेकेंडली, एक फेस्टिव साइकिल होता है कि फेस्टिवल के बाद थोड़ा सा इन्फ्लेशन नीचे आता है कई चीजों में, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन कम हो जाता है। और ऑफ कोर्स इट्स गुड दैट होलसेल WPI एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा इससे कोई हमेशा इन्फ्लेशन नीचे रहे। समटाइम इन्फ्लेशन इज लो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड इटसेल्फ। सो आप एक नंबर को किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करा जा सकता है कि वो नंबर सप्लाई कम होने की वजह से हुआ है तो गलत नंबर है, अगर वो डिमांड शायद की वजह से हुआ तो एक अलग इंटरप्रिटेशन होती है। बट जो आपने नंबर अभी कहे हैं, आई थिंक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सीजनैलिटी इन इट, और आई थिंक प्रॉब्ली गोइंग फॉरवर्ड विल सी अ माइनर इंक्रीज इन इट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस, जो कि थोड़े दिनों बाद अभी पास ऑन होना शुरू हुए हैं, थोड़े से और पास ऑन होंगे। तो आई थिंक देयर इज एन चांस ऑफ अ स्लाइट इंक्रीज, बट दैट इज नॉट वरीसम। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ के उससे बाजार को कुछ फर्क पड़ने वाला हो, या को वो आरबीआई के जो टारगेट्स है ओवरऑल इन्फ्लेशन के, उसको कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करे। जी हाँ, यह एक बात महत्वपूर्ण है कि डब्ल्यूपीआई में भी कमी है, सीपीआई में भी कमी है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जो मुद्रास्फीति है वो बढ़कर 4.24% हो गई है। नवंबर में ये 2.97% थी। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? नहीं, देखिए, डिपेंड, अगर आप जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं तो वो एक ब्रॉड
सेट ऑफ नंबर है जी उसमें से कौन सा एलिमेंट आपने कहा मैन्युफैक्चर्ड, उसमें रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे पिछले करीब 3.5 महीने में जो मेटल प्राइसेस हैं, या तो मेटल प्राइसेस को 30% बढ़ गया है, कोई 40% बढ़ गया है, तो वो जो प्राइस इंक्रीज है वो अब इन नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो रही है, बिकॉज वो जब हुआ था उसका एक टाइम लैग इफेक्ट होता है। चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक ये आएगा, अब थोड़ा एक तो इंटरनेशनल ट्रेड और खुल गया है, थोड़ा शिपिंग रेट्स काफी बढ़ गए थे, थोड़े कंटेनर की प्रॉब्लम थी। सो सम ऑफ दीज इन्फ्लेशन जो होती है वो रिफ्लेक्शन होती है टेम्परेरी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से। तो जो आपने मैन्युफैक्चर्ड गुड की बात करी वो इसलिए है क्योंकि पीछे जो डिसरप्शन हुई है शिपिंग वगैरह में, उसकी वजह से आई है। दैट इज नॉट नेसेसरी समथिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल या कि बहुत ज्यादा कुछ घबराने वाली चीज हो। Right. And now we are joined by Mr. S.P. Sharma, Chief Economist, PhD, Chamber of Commerce, for a detailed discussion on WPI. Mr. Sharma, welcome to the program. Thank you. And before we further discuss the figures that have come out today, the WPI figures, for our listeners who are new to economics and business news, briefly explain what exactly is WPI and how is it an indicator of the economy? WPI is a broad indicator of price reflection in the economy, and WPI contains various segments like segment of the primary articles, then food articles, and within the food articles, cereals, vegetables, non-food articles, then fuel and power, petrol, and then manufactured products. So all these parameters are in the WPI, and WPI provides a major reflection that how the prices are going up or down in the economy on the basis of demand scenario. Majorly, wholesale price index reflects the demand scenario by the manufacturers, how the manufacturers are getting the prices of the inputs, and how those prices are reflected in the wholesale price. So this is a major reflector of the economic trajectory, right, and how the economy will move forward, and what will be the scenario of CPI going forward on the basis of the wholesale price index. So now we see that the wholesale price index for December, of course, has fallen, which is one of the factors is because of the lower food inflation expected, like our earlier experts said, in winter months. Should we also expect similar kind of a trend in January? The inflation should ease in January as well? Yes, maybe in January also, because now the food prices are coming down because of various supply disruptions. There was some spike in the food prices during the last 2-3 months. But now year on year, prices are coming down because in the last year, prices were going up because of the various factors. So on the high base, now the prices are coming down. Like in the primary articles, the inflation was 4.3 in October, and then in November 2.7, and now the inflation is minus 1.6. And within the food articles, inflation was 7.1% in October, and 3.9% in November, and minus 1.1% in December. So going forward, trend is indicating that prices are coming down, and in the next year, in the next month also, for the month of January also, prices are expected to come down, and inflation will again come down from the current level. And majorly the prices are coming down in the vegetable segment, because earlier vegetable prices were very high year on year. So now prices are coming down, like in the segment of there are few segments like in the potato, there was a significant high inflation in the potato segment, but now the inflation is coming down to 37% from a high of more than 115% in the month of November. So that is a significant reduction in the inflation scenario in the category of potato within the vegetable segment. And on the same line, inflation is now diminishing in the overall vegetable segment from plus
12% to minus 13%. So again, strong deceleration is there in the overall vegetable segment. And like in onion inflation was at around minus 7.6%. Now the inflation is minus 54%. So all these segments of the vegetable category are providing a great relief to the overall inflation scenario in the WPI segment. But in the manufacturing products, the inflation is increasing, because in manufacturing, inflation was 2.2% in October and 3% in November. Now the inflation is 4.2% for the month of December. That may be because now the manufacturing activity is resuming its pace with the with the COVID-19 by the government, and demand scenario emerging in the normal trajectory going forward. So manufactured products have shown a significant jump in the inflation during the last 2-3 months. जी एसपी शर्मा जी, यहाँ ये जानना चाहेंगे कि बहुत राहत की खबर है कि थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर दोनों अभी नियंत्रण में है, और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एक दायरा एक तय किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई दर को लेकर के 6% या उससे 6% के आसपास के से ज्यादा ना हो, तो उसमें अब आरबीआई की जो आगे की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उसमें क्या आप कोई परिवर्तन देखते हैं या एज इट इज चलता रहेगा? देखिए, मेजरली जो आरबीआई का जो ट्रैकिंग है वो सीपीआई इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन में कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तो उसी के बेसिस पे जो डिसीजन है वो लिया जाता है। लेकिन डब्ल्यूपीआई एक मेजर इंडिकेटर तो होता है कि जो रिफ्लेक्ट करता है कि आने वाले टाइम में डिमांड सिनेरियो किस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स भी तभी प्रोडक्शन करेंगे तभी उनको आगे रिटेल सेगमेंट में एक डिमांड दिखाई देगी। लेकिन ये जरूर है कि सीपीआई इन्फ्लेशन काफी नीचे आया है। सीपीआई इन्फ्लेशन जो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर जो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है वो 4.6 पे आ गया है, जो कि पहले 7% से भी ऊपर था। अगर हम पीछे के उसमें देखें तो 6.9% तो ये नवंबर में ही था, जिससे ये कम होके 4.6 पे आ गया है। तो यहाँ पे ये मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब इन्फ्लेशन सीपीआई में डिसेलरेशन हो रही है वो भी फूड प्राइसेस की वजह से ही है, तो ओवरऑल जो ट्राजेक्टरी है इन्फ्लेशन की वो अंडर कंट्रोल रहेगी, क्योंकि आरबीआई का टारगेट है इसको 4% के आसपास लेके आना। तो अगर ये 4% के आसपास आ जाता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कोप है कि आरबीआई एक फर्दर जो लिबरल जो मोड है मॉनेटरी पॉलिसी का वो रखेगा। एक पॉलिसी स्टांस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा और आने वाले टाइम में और भी रेपो रेट में कट की उम्मीद की जा सकती है। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में ठीक है कि इन्फ्लेशन काफी रिड्यूस हुआ है, लेकिन सीपीआई में इन्फ्लेशन अभी और नीचे आने की उम्मीद हम कर सकते हैं कि 4% के आसपास आके कंसोलिडेट करे, सो दैट के जो हमारा ट्राजेक्टरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो विद इन ट्राजेक्टरी रहे और आरबीआई के पास एक अच्छा जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है, जो एक सॉफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है, उसको आगे कंटिन्यू करने का एक मौका मिले, सो दैट के डिमांड इज ऑल्सो रिजुविनेटेड, डिमांड को एक अच्छा सहारा मिले और जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आगे और स्ट्रेंथन हो। एसपी शर्मा जी, कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। और अब रुख करते हैं शेयर बाजार का। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आज प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में मामूली बढ़त दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.19% की वृद्धि से 92 अंक ऊपर 49,584 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.21% की बढ़त से 31 अंक चढ़कर 14,596 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में भी आज मामूली बढ़त देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.29%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.17% बढ़त में रहे। The benchmark domestic stocks today logged modest gains amid mixed global cues. The BSE Sensex closed 92 points or 0.19%, up at 49,584, and the NSE Nifty rose 31 points or 0.21% to trade at 14,596. The broader market at BSE also gained marginally.
The BSE Mid Cap Index ended 0.29% up, while the BSE Small Cap Index added 0.17%. In the Sensex Pack, shares of 15 companies climbed, while 15 logged losses. TCS was the top gainer as it climbed 2.9%, followed by IndusInd Bank, which gained 2.8%. Larsen & Toubro climbed 1.8% and ITC gained 1.4%. Reliance and Hindustan Unilever both added 1.1%. On the other side, HCL declined 2.6% and Axis Bank fell 1.7%. Asian Paints and Ultratech Cement both ended down 1.3%, while Infosys and Tech Mahindra both slipped 1.2%. In sectoral indices, 11 out of 19 sectors climbed. The capital goods was the top gainer as it surged 1.7%, followed by oil and gas, which climbed 1.4%. Healthcare and energy sector stocks both gained 1.1%. On the other hand, metal declined 1.2% and basic materials fell 0.6%. In BSE Trade, shares of 1,501 companies gained, while 1,509 declined. Shares of 173 companies remained unchanged. 268 companies rose to their 52-week high, while 39 companies fell to their 52-week low. Mr. Rajiv, now the stock exchange is maintaining its upward trend, even though the highs of the earlier in the week are not there. So what does it mean for the investor? What would you advise for the common man who's investing in the share market? Well, because the valuations are high and there is a liquidity rally because US Fed is pumping a lot of money in their markets, which obviously finds a way in emerging markets, including India. So probably now valuations are not as cheap as they were a couple of months back. Though there's no doubt there is economic recovery which is at a much faster rate as compared to what most of the analysts had predicted. But given the fact that these kind of bull runs which are driven by central bank pushing money into markets in order to revive economy, they tend to show a tendency that at the first indication that the money printing machine is going to slow down, the corrections are very sharp. So at this point of time, I would say if an investor should be cautious, one in terms of buying, and second in the quality of stocks they're buying. Some of the mid and small caps which don't deserve to be at the prices which they're quoting today as is increasing every passing day. So it's time to be cautious. And if you're investing, if you don't know how to pick a stock, please stay with your mutual fund. Don't stop your SIPs and don't cut your exposure which you take regularly through your mutual funds. But slightly be more cautious in buying. Just don't buy on rumors or any kind of a hearsay, which in these kind of market when sentiment is such, keeps coming in your WhatsApp group and all that. So be cautious. Look in the business before you're buying, because essentially when you are investing, you are buying a part of the business. And whether the business is going to do well, whether the management is good, please be more cautious on all these factors at this point of time. जी राजीव नागपाल जी, कंपनियों के तिमाही नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और उम्मीदों से अच्छे आए, खासतौर पर आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के, और टीकाकरण शुरू होने को लेकर भी अब खबरें आ रही हैं। बहुत जल्द टीकाकरण भी शुरू होने वाला है। इससे बाजार में उत्साह तो बना हुआ है और सेंसेक्स लगभग अब 50,000 के करीब पहुंचने को है। लेकिन अब थोड़े दिनों बाद ही बजट भी आने को है और बजट में अगर आशानुकूल उम्मीदों से उलट अगर कोई सरकार की कुछ घोषणाएं होती हैं तो क्या बाजार में आप कुछ करेक्शन देखते हैं? नहीं, देखिए दो चीजें। जहां तक आपने आईटी क्षेत्र की बात करी, बिकॉज वो एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं फॉर आईटी कंपनीज, भारतीय कंपनीज के, एकदम बहुत शार्प इंक्रीज इन डील पाइपलाइन हुआ है। बिकॉज हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को या हर एक को जो अपना डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस था, या वो ऐप पे जाना था या क्लाउड में शिफ्ट करना था, जिसको वो सोचते थे कि हम शायद 2 साल बाद धीरे धीरे करके कर लेंगे, लॉकडाउन ने उसको फोर्स कर दिया उसको आगे करने के लिए। तो जो डील पाइपलाइन है आईटी कंपनीज की, वो अगले कम से कम 2 साल के लिए लिटरली फुल हो गई है। मार्जिन उनके इंप्रूव हो गए। तो वो एक क्षेत्र इसलिए बेटर रिजल्ट दे रहा है बिकॉज इट इज वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स जहां पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑफ दिस पेंडेमिक। कमिंग टू योर पॉइंट ऑफ बजट, आई थिंक अगर आप बजट पिछले कुछ बजट भी देखेंगे, until unless there is anything which is directly related to the taxation on the capital market products or saving products, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बाजार को ऐसा कुछ है कि
नेगेटिव कुछ आ सकता है until unless एक्सचेंज बढ़ जाए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ जाए या ऐसा कुछ बढ़ जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई आसार अभी दिखता है जी। और अब हाँ जी, तो आई डोंट थिंक देर इज एनी जो करेक्शन है दैट प्रॉब्ली वुड बी ट्रिगर्ड व्हेन देर इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम यूएस फेड विच सेज कि अब यूएस इकोनॉमी इज डूइंग फाइन, तो हम जो स्टिमुलस की जो जरूरत है वो थोड़ी कम है, तो शायद हम जो उनका क्वांटिटेटिव ईजिंग एक अनसीन क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम है वो थोड़ा सा वो कम कर देंगे, और इजी मनी लिक्विडिटी जो है इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ने की अगर इंडिकेशन होंगी, तो होल ऑफ मनी विच हैज कम टू इमर्जिंग मार्केट प्रॉब्ली अ पार्ट ऑफ इट विल गो बैक, दैट प्रॉब्ली विल बी रीजन फॉर the correction market. I don't think budget and all is going to be the main reason for a correction. और मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो क्या आने वाले वक्त में, जैसे सरकार ने अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव यानी कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी, क्या उससे आने वाले दिनों में जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें कुछ तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, कुछ हद तक तो वो जो चीजें हैं वो प्राइस इन हो रखी हैं, बट जब हम मिड कैप बोलते हैं तो मिड कैप इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स। इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कंपनी का है तो उसको हम मिड कैप कहेंगे। अब जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में है, जो आउटसोर्सिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में है, उनमें से कुछ कंपनी जो है वो लिटरली असेंबलर्स हैं, उनके जो रॉ मटेरियल है वो इसको इम्पोर्ट करती है, यहाँ पे असेंबल करती है और आगे बना के बेच देती है। वो जो कि ज्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, probably those companies are the ones in some sectors which will do well. But of course, when we say mid-cap, one has to be very cautious because the management quality issue, which is the most important thing one has to look while investing, भी mid-cap companies में ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस शीट पे विश्वास करना, उन नंबर पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। So, I wouldn't say that they cannot rise. They can surely rise, but depends on the stock and the company and the business where you investing your money. उसको देख के करें, और वैल्यूएशंस क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चीप नहीं है, तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि स्लाइटली बी मोर, इट्स बेटर टू एरर ऑन द साइड ऑफ कॉशन देन एनीथिंग एल्स। Mr. Nagpal, one more question. Can we expect more stimulus to come from the government in terms of the economic package, or liquidity from the central government in near future? Well, I think, surprisingly what has happened is that Indian economy has done extremely well without resorting to all what the Western economy and then developed economy had to resort to push up their economies. And I mean, this has been the trend for last 2 decades now, starting from 2001 when the easy money policy was adopted. I don't think so. There is going to be at this point of time we are going to see any special kind of package, or the requirement is there. I mean, let's not focus on the budget, but I think the way this government has been working is they give something when it is required. So even beyond the budget, I don't think there is a requirement at this point of time, given the fact that economy, most of the sectors have recovered pretty much well. The pent-up demand, all those things have done well. So I don't expect any package to come in. And to be very honest, I don't even see right now a need for it, immediately in short term. Probably after the vaccination we are halfway through, if there are some sectors which need probably help, then sector specific can be looked at, but I don't think a broad reduction in by way of taxes and all is required at this point of time. जी, और नागपाल जी, अब अगर निवेशक के नजरिए से बात करें तो क्या अब जो बाजार की स्थिति है वो अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग का सही समय है, या अभी निवेशक को और इंतजार करना चाहिए? मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा पोर्टफोलियो रीजिगिंग का वक्त है। प्रॉफिट बुकिंग का भी वक्त है, बिल्कुल। आप जब नीचे में लेके ऊपर में बेचेंगे नहीं, दोबारा आपके पास देन ओनली इट रिमेन द पेपर प्रॉफिट। श्योरली आई थिंक एंड आई रिजर्व माई राइट टू बी रॉन्ग, बट आई थिंक इट्स मोर टाइम टू रीजिग योर प्रॉफिट। जो कि स्टॉक्स जो आपके पिछले काफी टाइम से अंडर परफॉर्मर थे, वो नहीं चल रहे थे, अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उनको बेचकर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना, वो चाहे शायद थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी लगे, उस अच्छी बिजनेस में इन्वेस्ट करना और ठीक मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करना, वो टाइम है। पोर्टफोलियो रीजिगिंग की अपॉर्चुनिटी हमेशा बुल मार्केट में मिलती है। बेरिश मार्केट में तो पोर्टफोलियो रीजिगिंग की
आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. आई थिंक इट्स अ टाइम टू रीजिग योर पोर्टफोलियो श्योरली. जी. और अब डाल लेते हैं आज रुपए के प्रदर्शन पर. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 73 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ. शेयर बाजार में लिवाली के बीच रुपए में ये मजबूती देखी गई. और अब बात करेंगे एशियाई बाजारों की. एशियाई शेयर बाजारों में आज सीमित दायरे में मिलाजुला कारोबार देखा गया. अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया और वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीदों के बीच निवेशकों का रुख सतर्कता भरा रहा. जापान का निकेई और हांगकांग का हैंग सेंग दोनों में 0.9% की बढ़त रही और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.8% चढ़ा. वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज हुई, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.9% के नुकसान में रहा. अंतर्देशीय कारोबार के दौरान आज यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे. लंदन के FTSE 100 में 0.7%, जबकि फ्रांस के कैक और जर्मनी के डेक्स में कारोबार लगभग सपाट रहा. In the U.S. markets, Wall Street's main indices finished marginally higher yesterday as investors remained cautious, looking for the details of the next U.S. fiscal stimulus plan. On the other hand, U.S. Congress move to begin impeachment hearings against President Donald Trump also dampened the investor sentiment. U.S. Treasury yields fell after rising for 6 straight sessions, giving a boost to rate-sensitive defensive sectors such as utilities and real estate. The Dow Jones Industrial Average ended flat. The S&P 500 added 0.2% and Nasdaq Composite Index rose 0.4%. In the crude prices, oil prices today dipped as bullish signals from Chinese import data and U.S. crude oil stocks draws were outweighed by surging coronavirus cases in Europe and new lockdowns in China. Brent crude prices were trading around $55.80 per barrel, while WTI crude prices were around $53.80 per barrel. And Mr. Nagpal, now that the crude prices have dipped today, although they have dipped today, but there has been an increasing trend in the oil prices. Where do you see this trend going? I mean, we're talking about India. Yesterday, Delhi saw its new high of, in petrol prices. Well, see, a part of the liquidity which has been generated, it goes to commodity markets. Not only oil, but if you look at the copper prices, every commodity, because US dollar is weak, so the commodity price tend to remain higher. But in case of oil, it's slightly more, the element is of cartelization. There has been a cut on production which has been announced. But because the money, speculative money, there's so much of liquidity is moving into oil, we might see a short-term, range-bound movement, and then when the economic demand, the real demand start to increase, especially from China, probably we might see a spike. But I don't see them moving beyond 60-65 levels in any time soon. जी. और अब कच्चे तेल के बाद नजर डाल लेते हैं सोने पर. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी के मूल्यों में गिरावट का असर आज घरेलू बाजारों पर भी पड़ा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना लगभग 400 रुपए के नुकसान के साथ 48,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. चांदी भी करीब 800 रुपए टूटकर 65,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना नुकसान के साथ $1,841 प्रति औंस पर रहा. राजीव नागपाल जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. And now before we close, a reminder of the headlines. Wholesale inflation drops to 1.22% in December due to fall in food prices. Domestic stocks log modest gains amid mixed global cues. Sensex closes at 49,584. Nifty settles at 14,596. And crude prices fall in sync with losses in international markets. खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी से थोक महंगाई दर दिसंबर माह में गिरकर 1.22% पर आई. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मामूली बढ़त. सेंसेक्स 49,584 पर हुआ बंद. निफ्टी 14,596 पर. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में गिरावट से घरेलू बाजारों में सोने के दाम गिरे. And that's it in this edition of Market Mantra. Do tune in tomorrow at 3 p.m. for our program Money Matters. Thank you. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.